Hello my dear kids, welcome back to the Economic Series by Amit Publishing House. Children, I am Vandana and we are doing Maths of Class 5. This is a book, Joyfull Mathematics, and today we are going to start chapter number 9, Fractions. So let's start this chapter. Here we have to match the following. An exercise is given, you have to do this. Some figures are given and their names are written here, you have to match them. The first figure is, there are total 5 triangles you can see and 2 are shaded. So 2 on 5 means 2 fifths. Similarly, how many petals are there? There are total 5 petals out of which 3 are shaded. So 3 fifths. Similarly, there are 4 petals and 3 are shaded. So 3 upon 4, 3, 4. Similarly, you have to match the rest. A fraction is a part of a whole unit or collection or group of objects. Fraction क्या है? किसी भी एक whole का एक part होता है. एक पूरे whole का एक part. In the joining figure, the fraction have been represented by the shaded portion. So यहाँ पे fraction कैसे बताया गया है? Shaded portion से बताया गया है. तो ये पूरा है होल. अब इसका हाफ है तो इसे 1/2 कहेंगे और इसका 1 आप देख सकते हो हाफ का भी जो है हाफ निकाल रखा है मींस 1/4 पूरे होल का. What are the types of fractions? The first is like fractions. Like fractions क्या होते हैं? Fractions having the same denominator. वो फ्रैक्शन जिसके जो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो सेम होता है, ऊपर का भले ही चेंज हो पर नीचे के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए. ऐसे फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं. नेक्स्ट इज अनलाइक फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स. वो फ्रैक्शन जिसमें अलग डिनोमिनेटर्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस. अब आप देख सकते हो यहाँ पे सबके डिनोमिनेटर चेंज है, न्यूमरेटर भी चेंज है और डिनोमिनेटर भी चेंज है. तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं. नेक्स्ट इज यूनिट फ्रैक्शंस. यूनिट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? वो नंबर्स होते हैं जिनमें जो है न्यूमरेटर 1 होता है, डिनोमिनेटर कुछ भी हो पर न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? 1. सो ऐसे फ्रैक्शंस को हम यूनिट फ्रैक्शंस कहते हैं. नेक्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन whose न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर. प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से कम होता है. ऐसे फ्रैक्शन जो है प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं. नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. फ्रैक्शन whose numerator is either equal to or more than the denominator. ऐसे फ्रैक्शन जिसका जो न्यूमरेटर है वो या तो इक्वल हो या फिर ज्यादा हो डिनोमिनेटर से. तो आप देख सकते हो कि डिनोमिनेटर 2 है पर जो न्यूमरेटर है 5 है, डिनोमिनेटर 3 है पर न्यूमरेटर ज्यादा है. तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं. नेक्स्ट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन. अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन पार्ट इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. सो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? होल नंबर और जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उन दोनों का मिक्सचर होता है. सो आप देख सकते हैं होल नंबर भी है और यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन है. कन्वर्जन ऑफ अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं? तो हियर यू कैन सी 3 1/4 इज गिवन. ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसे इम्प्रॉपर में हमें कन्वर्ट करना है. तो हम इसमें क्या करते हैं? पहले हम ये जो डिनोमिनेटर है इससे हम होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं. सो 4 3 is 12. अब जो 12 आंसर आया उसे हम इस ऊपर वाले न्यूमरेटर में प्लस कर देते हैं. सो 12 + 1 is 13. सो 13 हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर विल नॉट चेंज, वो सेम रहेगा. कन्वर्जन ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. कैसे करेंगे? हम जो न्यूमरेटर है उसे डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे. सो न्यूमरेटर इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, वी गेट 3 1/8. यहाँ पे आप देख सकते हो 3 is the quotient, 1 is the remainder and 8 is the divisor. So 3 will be the whole number, 1 जो रिमाइंडर है दिस विल बिकम द न्यूमरेटर और 8 जो डिवाइजर है दिस विल बिकम द
denominator. Now let's do this exercise 9.1. टेक द यूनिट फ्रैक्शन. अब इनमें से यूनिट फ्रैक्शन कौन सा है? यूनिट फ्रैक्शन क्या होते हैं? जिसका न्यूमरेटर जो है 1 होना चाहिए. अब इसमें से न्यूमरेटर किसका 1 है? दिस वन. सो दिस इज यूनिट फ्रैक्शन. क्वेश्चन नंबर 2 इज चेंज द फॉलोइंग इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4 एंड 4 प्लस 1 इज 5. सो इट इज 5 अपॉन 2. Similarly, let's do this one. 2 multiply 3 is 6 and 6 plus 1 is 7. So 7 upon 2. This is the improper fraction. Similarly, let's do this one. 6 multiply 6 is 36 and plus 3 which is 39 upon 6. So similarly, I have to convert the rest of them into the improper fractions. Change the following into mixed fraction. Numbers दिए गए हैं, इन्हें mixed fraction में convert करना है. So for converting them into the mixed fraction, हमें क्या करना होगा? We have to divide the numerator by the denominator. Numerator को denominator से divide करना है. So 8 से हमें 15 को divide करना है. So let's see what we are going to get. So here 1 is the whole number, 7 upon 8. So this is the mixed fraction that we get. Similarly, let's do the C part. 6 से हमें 25 को divide करना है. So here the number is 4 is the whole number, 1 is the numerator and 6 is the denominator. Next, let's do this. 63 को divide करना है 8 से. So here 7 upon 8. So this is the mixed fraction. Now let's learn about the equivalent fractions. A given fraction and various fractions obtained by multiplying. एक fraction दिया गया है या बहुत सारे fractions हमें मिलते हैं multiply करने के बाद या divide करने के बाद its numerator and denominator. जब हम numerator और denominator को multiply करते हैं by the same non-zero number, उसी एक नंबर से दोनों को multiply करते हैं, we will get the equivalent fraction. For example, 6 upon 7 दिया गया है. अब इसे हमें 2 से दोनों को multiply करते हैं, we get 12 upon 14. अब 3 से दोनों को multiply करते हैं, we get 18 upon 12. So here the equivalent fraction of 6 upon 7 is 12 upon 14 and 18 upon 21. Therefore, these are the equivalent fractions. Now let's see this example 1 that's given here. Write 3 equivalent fraction of 3 upon 8. So 3 upon 8 की हमें 3 equivalent fractions लिखने हैं. So for this, let's multiply these numbers by 2, 3 and 4. So when we multiply this with these two numbers by 2, we get 6 upon 16. By multiplying by 3, we get 9 upon 24. And by multiplying with 4, we get 12 upon 32. So hence the required equivalent fractions are 6 upon 16, 9 upon 24 and 12 upon 32. Now reducing a fraction to the lowest term. Fraction को कैसे lowest term में हम convert कर सकते हैं? We can reduce a fraction to its lowest term by dividing the numerator and denominator by their HCF. Numerator और denominator को उसके HCF से हम क्या कर देंगे? Divide कर. So here the fraction is given. You have to convert this into the lowest form. Lowest form में करना. So let's find the HCF of these two numbers. HCF हमने निकाला इन दोनों numbers का. We get 8. So here let's divide these two numbers. अब इन दोनों numbers को हम 8 से divide कर देंगे. So when we divided these two numbers by 8, we get 15 upon 31. So 15 upon 31 is the lowest form of 1 upon 120 upon 148. A fraction in its lowest term when its numerator and denominator have no common factor. जब इन दोनों के 1 के अलावा कोई और common factor ना हो तो ऐसे fraction को हम lowest term में कहते हैं. Now let's do this exercise 9.2. Write two equivalent fractions of the given numbers. So here
3 upon 5 is given. Let's divide it by 2. Both the numbers we get 6 and 10. Again, let's divide it, multiply it by 3. We will get 9 and 15. So 6 upon 10 and 5 upon 9 upon 15 are the two equivalent fractions of the given number. Now let's find out the equivalent fraction of the number, this one. So multiply by 2, it's 16 upon 22. Let's multiply this by 3, we get 24 upon 33. So here the equivalent fractions of 8 upon 11 is 16 upon 22 and 24 upon 33. Now let's do this question number 2. Find the equivalent fraction for each of the following whose numerator is 18. So इनके लिए हमें क्या करना है, इनका न्यूमरेटर 18 बनाना है. So इसके लिए हमें equivalent fraction find out करना है. So 1 में हम 18 को multiply कर देते हैं, it will be 18. Same number to be multiplied here. So we are going to get 36. 18 upon 36 is the answer. Similarly, let's do this one. Here also we want 18 as the numerator. Numerator में हमें 18 चाहिए. So what we are going to multiply here? Let's divide 18 by 2. We are going to get 9. अब इस same 9 से हम नीचे वाले को multiply करेंगे. 5 9s are 40. So here the number is 18 upon 45. Similarly, you have to do the rest. Find the equivalent fraction for each of the following whose denominator is 40. Denominator हमें 40 चाहिए. So 3 upon 4 है. इसमें कौन सा number हम multiply करेंगे कि we will get the denominator as 40. So 4 में multiply करेंगे अगर 10 तो we will get 40. Same number to be multiplied up. So it's 30 upon 40. Similarly, let's do this one. इसमें कौन सा number multiply करेंगे कि we will get 40. So here we are going to multiply 4. So 10 4s is 40. अब हम ऊपर भी 4 को multiply कर देते हैं. It's 36. So here the answer is 36 upon 40. Now question number 4, fill in the missing numbers. यहाँ पे missing number find out करना है. So 36 को हम 9 से divide करते हैं. So 90 table में 36 देखना है हमें. So it's 4 times. Similarly, let's multiply this by 4. It will be 32. Similarly, let's find out the answer of this question, B part. 6 में कौन सा number multiply करेंगे? We will get 36. So we are going to multiply 6 here. Similarly, we have to multiply 6 here. So here 102 is the answer. Similarly, children, you have to find the answer of the rest of the questions. Now, question number 5 is reduce the following fraction to their lowest term. ये जो fractions है lowest term में हमें जो है reduce करना है. So with what number we are going to divide this? Let's find out their HCF first. HCF find out करेंगे. So the HCF of 80 and 65 is, so children, here you can see 5 is the HCF of all these two numbers. So अब हम इन दोनों को 5 से divide करेंगे. So when we divide these two numbers by 5, we get 13. And when we divide 80 by 5, we get 16. So we have converted this into the lowest term. So the lowest term is 13 upon 16. I hope this is clear. Similarly, let's do this question number H. Let's divide this 100 by 55.
Now 45 say we are going to divide this 55. From 10 we are going to divide this 45. Now from 5 we are going to divide this 10. So here the HCF is 5. So we have to divide these two numbers by 5. And we are going to get the answer 11 upon 20. So 11 upon 20 is the lowest term of this number. Now let's learn the comparison of fractions. How can we compare the fractions? If two fractions have the same denominator, अगर दो fractions में the same denominator है, then the fraction having the greatest numerator is greater. So अगर दोनों के denominator same है, तो जो भी fraction जिसमें सबसे बड़ा numerator होगा, that will be the greatest number. For example, we have to compare 5 upon 7 and 2 upon 7. अब इसमें दोनों के denominator same है. Numerator को check करते हैं. 5 is greater, so 5 upon 7 is greater than 2. If the given fractions have different numerators, अगर दोनों ही fractions के numerator different हैं and denominator भी अलग-अलग है, then we first change them into like fraction. हमें पहले उन्हें like fraction में convert करना है. Having the same denominators, दोनों के denominators same होंगे. That can be done by finding LCM of the denominator. दोनों के LCM का हम दोनों के denominator का LCM find out करेंगे. For example, 2 upon 5 and 1 upon 6 is given. अब यहाँ पे देखेंगे कि denominator दोनों की अलग है. तो हम 5 और 6 का LCM निकालेंगे. So LCM निकालने के बाद we get 30. So let's divide 2 upon 5 by to get 30. For getting 30 we have multiplied 5 by 6, so it will be 12 upon 30 and 1 upon 6. अब इसको 30 से हमें तो हम क्या करेंगे, 6 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे. We will get 5. We will multiply 5 in both the numbers, so we will get 5 upon 30. So here we have converted the denominators. The denominators are same now, 12 upon 30 and 5 upon 30. ये दोनों जो हमारे जो numbers हैं इनके denominators same हो गए. Now let's compare the numbers. तो अब जब हम इन्हें compare करेंगे, we will get 12 is greater than 5. So here 2 upon 5 is greater than 1 upon 6. So children, let's see this example. Example number 3. In an examination, Deepsika scored 92 marks out of 100 in mathematics and 75 marks out of 80 in science. So here children, we have to compare कौन से marks Deepsika के is greater. In which subject she scored better? कौन से subject में उसने अच्छे marks लाए? So here the marks that Deepsika got in maths are 92 out of 100 and in science 75 out of 80. So now we will compare these two and what we are going to get. So for comparing हमें पहले इन दोनों के जो LCM है इन्हें सेम करना होगा. So अब इन दोनों के LCM को हम सेम करेंगे कैसे? By finding out their LCM. अब इनका LCM जो हमने निकाला, these are the numbers. जब इन्हें हमने multiply किया, we get 400 as the LCM. Now 92 upon 100, इसे 400 करने के लिए हमें 4 से multiply करना पड़ा 100 को, so it became 400. Similarly ऊपर भी हमें 4 से multiply करना है. Next 75 upon 80, अब इसे 400 करने के लिए हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है. सिमिलरली 5 से ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई किया, वी गेट 375. अब आप देख सकते हो कि दोनों की जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम हो चुके हैं. 375 अपॉन 400 एंड 368 अपॉन 400. अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है. नाउ वी कैन इजीली कंपेयर which number is greater, 375 or 368. So 375 is greater, so 75 is greater than 92 upon 100. Hence Deepsika scored better in science than in maths. Now let's learn ordering of fractions. Fraction को order कैसे change कर सकते हैं, orders में कैसे लगा सकते हैं. And for this, let's learn how can we convert these fractions in ascending and descending order. So here the first example is given.
दैट अ फ्यू नंबर्स आर गिवन, आपको इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है और उसके लिए क्या जरूरी है, इनके हमें पहले डिनोमिनेटर को सेम करना होगा. सो फर्स्ट द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर, जितने भी ये डिनोमिनेटर्स हैं इनके एलसीएम ले लिया हमने. एलसीएम लेने के बाद these are the numbers that we get. अब इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद we get 240. So 240 is the denominator. And now let's convert all these numbers in with equal denominator. Now here you can see 7 upon 10 को हमने जो है डिनोमिनेटर 240 करने के लिए 10 को 24 से मल्टीप्लाई किया है. सिमिलरली 24 से ऊपर के नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे. सेम प्रोसेस वी आर गोइंग टू डू. 240 करने के लिए 20 से मल्टीप्लाई किया है, 240 करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई किया है और यहाँ 240 करने के लिए 15 से मल्टीप्लाई किया है. सो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसी सेम नंबर से हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है. ये यू कैन सी. सो अब आप देख सकते हो इन सबके डिनोमिनेटर जो है और सेम हो चुके हैं. इन सारे नंबर्स की डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं. ओके, नाउ लेट्स कंपेयर देयर न्यूमरेटर. अब इनके न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं. सो लेट्स कंपेयर. सो 84 is smaller than 120 and it is smaller than 135 and it is smaller than 168. Now when we compare these we get 84 upon 24, 240 which is 7 upon 20. Next 120 upon 240 which is 6 upon 12. Next 135 upon 240 which is 9 upon 16 and 168 upon 240 which is 7 upon 10. So this is the ascending order. Like this we convert any number in the ascending order. Ascending means smaller to bigger. Now let's do this exercise number 9.2. So now children, let's do this exercise number 9.3. Which is greater? So इन दोनों में से कौन सा greater है? Let's find the LCM of these two numbers. 7 और 5 का LCM हम निकालेंगे. We are going to get, so 5 multiply 7, 35. अब 35 दोनों के डिनोमिनेटर को 35 करना है. So 4 upon 5, so 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो we will get 35. सिमिलरली ऊपर के नंबर को भी हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है. So 28. Similarly 2 upon 7, 35 यहाँ भी चाहिए हमें. 5 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे we are going to get 10. अब आप देख सकते हो दोनों नंबर्स के जो डिनोमिनेटर हैं 35 हो चुके हैं. अब which one is greater, 28 or 10? So 28 is the greater. So this means 4 upon 5 is greater than 2 upon 7. Similarly children, you have to find the rest. Let's do this question number C. So 7 upon 8 and 3 upon 4. So let's find their LCM. Now 2 multiply 2 multiply 2. So 8 is the denominator. So अब 8 denominator इसका तो पहले से है तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है. इसके डिनोमिनेटर को चेंज करना है तो 3 upon 4 के डिनोमिनेटर को 8 बनाना है. So multiply by 2. Here also multiply by 2. It will be 6 upon 8. अब 6 upon 8 और 7 upon 8 वैसे कौन सा फिगर है? Yes, 7 upon 8. So this means 7 upon 8 is greater than 3 upon 4. I hope this is clear. Similarly, children, find out the LCM of the rest of the questions and then find which number is greater. Now question number 2, fill in the blanks with the sign greater than and smaller than. So here आप देख सकते हो दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम है. सो जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम ऊपर के नंबर्स को कंपेयर करेंगे. 4 इज ग्रेटर. सिमिलरली यहाँ पे भी दोनों की डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर के नंबर को कंपेयर करेंगे. 9 upon 6 इज ग्रेटर. बट यहाँ पे जो है इन तीनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है. सो लेट्स
do this C part. अब 6 और 7 की डिनोमिनेटर को हमें सेम करना है. So LCM लेंगे. So 2 multiply 3 multiply 7. 21 multiply 2. 42 is the denominator. अब 42 इन दोनों के डिनोमिनेटर हमें करने हैं. So 5 upon 6, ऊपर भी हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है. So it's 35 upon 42 and the other is 5 upon 7. अब इनके भी डिनोमिनेटर को हमें 42 के अकॉर्डिंग करना है. So children, here 30 upon 42 will come. Which one is greater? This one is greater. So we have to mark it like this. Similarly, you have to find the answer of the rest of the questions. Now, arrange in ascending order. Ascending order में we have to arrange these. So first में हम देखेंगे सारे denominator same हैं, तो हम ऊपर वाले numbers को compare करेंगे. So first will be 2 upon 7, 4 upon 7, 6 upon 7 and 15 upon 7. So this is our answer. Similarly, let's do this D part. इन सब के denominator को same करेंगे. So let's take out their LCM. So here the numbers are 10, 6, 60. So 60 is the LCM of all these numbers. Now let's do them equal. So 60 हमें ऐसे करना है. तो हम क्या करेंगे? 5 upon 20 को we have to convert into 60. To multiply by 3. Here also let's multiply by 3. So it will be 15 upon 60. अब दूसरा नंबर देखते हैं. 3 upon 5 को हमें फिर से 60 बनाना है. 12 times is 60. Now let's multiply this number also with 12. It's 36. So 36 upon 60. Now 11 upon 10 को बनाते हैं 60. 11 upon 10. 60 बनाने के लिए we have to multiply with 6. So it will be 66. So here it is 66 upon 60. Next 13 upon 50. So here it is 52 upon 60. अब हमने इन सब के डिनोमिनेटर को सेम कर लिया. Let's compare them. So when we compare them, we get this is the smallest. So 5 upon 20. Next, this will come 3 upon 5. Next, 13 upon 15 and 11 upon 10. So this is our answer. I hope you have understood it. Similarly, you have to do the rest of the questions. Now, the next question is arrange in descending order, means bigger to smaller. So let's do it. Let's do this B part. अभी इसके सारे denominator same हैं. So let's see, the biggest is 9. So 9 upon 6 is greater than. Next is 5 upon 6. Next is 4 upon 6 and 1 upon 6. So this is the way we have to do this. Now let's do another one. Let's do this D part. Now children, let's take the LCM of all these numbers. So 15, 12, 6 and 5. So here the LCM is 60. अब 60 LCM करने के लिए हमें क्या करना होगा? 10 upon 15 को 10 upon 15 60 LCM करना है. Multiply by 4. It will be 40 upon 60. 40 upon 60. Next is 3 upon 12
तो हमें वापस से 60 करना है. Now multiply by 5. So 15 upon 60. Next 1 upon 6. It's 10 upon 60. Next 4 upon 5. 48 upon 60. So here let's the denominator is same. Let's compare the numerator. So 48, this one is greater. So 4 upon 5 is greater than 10 upon 15, greater than 3 upon 12, greater than 1 upon 6. So children, I hope you have understood it, how we have to arrange them in descending order. So ascending or descending, same way hai. We have to find out the LCM first and then we have to find out their ascending and descending order. So I hope it's clear to you. Similarly, you have to complete the rest of the questions. Now let's move on to question number 5. In an examination, Arush got 160 marks out of 200. So Arush को 160 marks मिले हैं 200 में से. अथर्व got 90 marks out of 100. So 100 में से अथर्व को 90 marks मिले. Whose score was better? किसका score ज़्यादा अच्छा था? So what we have to do first, we have to find down the. So आरुष के marks हैं 160 upon 200 और अथर्व के हैं 90 upon 100. So हम क्या करेंगे, फर्स्ट इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे. So 200 और 100 का एलसीएम निकालते हैं. So now let's multiply all these numbers. So it's 25 multiplied 8. So here the LCM is 200. Now ये marks तो already 200 में से हैं, अब इसे convert करना है 200 में से. So 200 में convert करने के लिए हम किस number से multiply करेंगे? We have to multiply it by 2. Similarly ऊपर के number को भी हम 2 से multiply करेंगे. So it will become 180. So जब हमने इन दोनों के मार्क्स को कंपेयर किया, हमने इन्हें कन्वर्ट किया, तो आरुष के मार्क्स हैं 160 में से 200 में से 160. सिमिलरली अथर्व के हो रहे हैं 200 में से 180. किसके मार्क्स आपको ज्यादा लग रहे हैं? 160 ज्यादा हैं या 180? सो यस, अथर्व के मार्क्स ज्यादा हैं out from Arush. So here the answer is marks of Atharv is greater than Arush. So Atharv will be the answer. Now question number 6 is 16 pizzas are divided equally among 20 children. So of team A में 20 बच्चे हैं, उसमें 16 pizzas को डिवाइड किया गया है and 20 pizzas are divided equally among 30 students of team B और 20 pizzas को 30 students में डिवाइड किया गया है. Who got the large share? Student of team A और team B. किससे सबसे ज्यादा शेयर मिला? तो A टीम को मिले हैं 16 upon 20 और B टीम को मिले हैं 20 upon 30. अब जब हमने 20 और 30 का एलसीएम निकाला तो we get 60. तो 60 इनका एलसीएम आया. अब 60 एलसीएम है तो इसे हमें 60 में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से. सिमिलरली 3 से. सो इट्स 48 upon 60. टीम ए का आंसर है 48 upon 60. अब टीम बी को हम कन्वर्ट करते हैं 60 में, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. इट्स 40 upon 60. तो जब हम इनके डिनोमिनेटर को कंपेयर करें बोथ आर सेम, लेकिन जब हम न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं, न्यूमरेटर किसका बड़ा है? सो ऑब्वियसली ए का बड़ा है which is 40. So A got the largest share of pizza compared to B. Now let's learn the addition and subtraction of fractions. How can we add the fractions?
टू ऐड टू और मोर अनलाइक फ्रैक्शंस, दो एक जैसे अनलाइक फ्रैक्शंस हैं उन्हें ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी नीड टू टेक आउट देयर एलसीएम, उन्हें उनका एलसीएम निकालना है डिनोमिनेटर का, एंड देन चेंज देम इनटू लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है. So let's see the example. Here an example is given. Here we have to convert these, you have to add these fractions together. तो हमने क्या किया है, इन फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए पहले हमने इनका तीनों का एलसीएम निकाला है. सो एलसीएम निकालने के बाद 48 इज द एलसीएम. अब 3/8 को हमने 48 के अकॉर्डिंग करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 18/48. 7/16 को 48 करने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21/48 और 11/48. ऑलरेडी ये 48 में है तो इसे हमने कुछ भी चेंज नहीं किया. सो नाउ अब 48 को कॉमन ले लेंगे और ऊपर के जो नंबर्स हैं उन्हें हम ऐड कर लेंगे. ऊपर के नंबर्स को ऐड किया तो आया 50/48. अब इसे हमने क्या किया है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है. तो सिंपलेस्ट फॉर्म में किया है, उसके बाद इसे हमने मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर दिया है. सो हियर द आंसर इज 1/24. नाउ सेकंड पॉइंट सेज मिक्स फ्रैक्शन कैन आल्सो बी एडेड बाय चेंजिंग देम इनटू इम्प्रॉपर. अगर मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है कुछ भी, इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, उसके बाद वी कैन ऐड. सो हियर एग्जांपल इज गिवन, ऐड 3 1/2 एंड 2 3/4. इन दोनों को हमें ऐड करना है. तो हमने क्या किया है, पहले इन्हें जो है इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया. 2 3 6 and plus 1 7, 7/2, 2 4 8 and plus 3 is 11, तो 11/4. अब इन दोनों की डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हमने इनके एलसीएम निकाले डिनोमिनेटर के. सो क्या देखा, 4 इज द डिनोमिनेटर. सो नाउ अब डिनोमिनेटर सेम कर लिया, न्यूमरेटर को भी हम उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे. उसके बाद हमने इन दोनों को प्लस किया and then we get 25/4, which is in mixed fraction it is 6/1/4. Now subtraction of fractions, कैसे हम fractions को subtract कर सकते हैं. To subtract two unlike fractions we follow the following steps. दो unlike fractions को subtract करने के लिए हम कुछ steps को follow करते हैं. Find the LCM of the denominator. Same चीज करनी है, हमें पहले LCM निकालनी है denominator की, then convert them into like fraction. फिर उन्हें like fraction में convert करना है as same denominator की तरह. फिर क्या करना है, subtract these fractions as we subtract like fraction. जैसे हम like fraction से subtract करते हैं वैसे subtract करना है. So यहाँ पे दो numbers दिए गए 1/3 from 4/6. So 4/6 में से 1/3 को हमें subtract करना है. दोनों के denominator को हमने same किया, LCM लेके 6. अब सेम करने के बाद 2/6 और 4/6 आ रहा है. 4/6 में से 2/6 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो वी गेट 2/6. सेकंड पॉइंट इज सेइंग मिक्स फ्रैक्शन कैन आल्सो बी सब्ट्रैक्टेड बाय चेंजिंग देम इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके. सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस. So first let's convert these numbers into the improper fraction. 2 2s are 4 plus 1 5, so 5/2. Next 5 3s are 15 plus 4, it is 19/5. So यहाँ पे 19/5 में से 5/2 को हमें subtract करना है. अब क्योंकि इन दोनों की डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे एलसीएम लेके. तो हमने जब इनके एलसीएम दिए, हमने डिनोमिनेटर को सेम किया, तो दिस इज द नंबर 38/10 एंड 25/10. अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट करते हैं, वी गेट 13/10. नाउ वी हैव कन्वर्टेड दिस अगेन इनटू द मिक्स्ड फ्रैक्शन. सो 13/10 is the answer. Now children, let's move on to exercise number 9.4. So children, here the first question is, we have to find the sum of the following, means we have to add these numbers. So दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम 13 को कॉमन ले लेते हैं and 5 plus 2 कर देते हैं. So which is 7/13. I hope this is clear. Similarly, let's do the C part. अब इन दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है तो हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं. So 6 and 5 का एलसीएम हमने निकाला, so it will be 30. So 30 हमने कॉमन ले लिया.
अब जो है इन दोनों को सेम करेंगे हम, तो 8/6 को हम सेम करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 को सेम करने के लिए, ऊपर भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी 40/30 प्लस अब 3/5 को हम सेम करते हैं 30 करने के लिए, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, here again 6, it's 18/30. Now let's add these two numbers, 30 को कॉमन ले लिया, 40 प्लस 18, तो ये क्या बन जाएगा 58/30. Now अब 58/30 आ गया, इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, सो इट इज 29/15. अब इसे हम कर देते हैं मिक्स फ्रैक्शन, सो 15 से हम 29 को डिवाइड कर देंगे, सो इट विल बी 114/15. So here children the answer will be 114/15 in the mixed fraction. I hope this is clear. Similarly, you have to find the answer of the rest of the questions. Now let's move on to question number 2. Add the following. Here two group of numbers are given in the mixed fraction. Let's convert them first. So 5 sevens are 35 and plus 3, 38/7. Now plus 42 plus 2 is 44/7. अब दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम है, so let's add them quickly. So 38 plus 44, it's 82/7. Now let's convert this into the mixed fraction. So here the answer is 11/5/7. So like this we have to find out the answer. Similarly, let's do this F part. F part के लिए हम क्या करेंगे, पहले इन्हें कन्वर्ट करेंगे, सो ये नंबर्स बन जाएंगे 2 1s are 2 plus 1 3, 3/2 plus 4 1s are 4 plus 3, 7/4. Now it's already 5/8. अब इन सबके जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, तो हम इनका एलसीएम निकालेंगे, सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस वी गेट 8 एज द एलसीएम. अब 8 एलसीएम आ गया है, तो 8 के बराबर करने के लिए 3/2 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 4, सो इट विल बी 8. सो नंबर बन जाएगा 12/8 प्लस अब दूसरा नंबर है 7/4, इसे 8 करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये बन जाएगा 14/8 प्लस 5 लिख देंगे क्योंकि इसका ऑलरेडी 8. नाउ लेट्स ऐड दीज नंबर्स, सो 12 plus 14 plus 5, it's 31/8. अब इसे जो हम कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड में. नाउ द नंबर इज 37/8. 37/8. So children, here the answer will be 37/8 as we did here. Similarly, children, you have to do the rest of the questions that are given here on your own. Now let's subtract. Here a few numbers are given, let's subtract them. So here you can see both the denominators are not same. 7 और 6 का हम निकालेंगे LCM. It's 42. अब 42 जो है इनका LCM निकल चुका है, तो
तो 42 के अकॉर्डिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, 5/7 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, सो ये बन जाएगा 30/42, 30 माइनस 1/6 को करना है अभी 42 में कन्वर्ट, सो इट विल बी 7/42. Now when we solve these we get, so 23/42 is the answer. Now let's convert this into the mixed fraction. So children, we are going to convert only those which are already given in mixed fraction. ये mixed fraction में नहीं है, so we will write only this answer. But here you can say this is in mixed fraction, so यहाँ पे हमें answer को mixed fraction में convert करना है. So here the answer is 23/42. Similarly, let's do this F part. 7 और 21 दिया गया है. अब इनके डिनोमिनेटर को भी हमें सेम करना है. So let's take out their LCM. So 21 is the LCM. अब 21 LCM हमने निकाल लिया है. तो 11 सेम रहेगा. 4/7 को हम चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 21 डिनोमिनेटर लाने के लिए. So it will be 12/21. तो यहाँ पे 12 ले लेते हैं. 12 minus 11 is 1/21. So I hope children this question is clear to you. Similarly, you have to find the answer of the rest of the questions. Now let's move on to question number 4. Subtract the following. Here we have to subtract these from this number. From वाले number, from के बाद जो number होता है वो bigger होता है, बाकी smaller होता है. So let's convert them. 4 ones are 4 plus 1 5, 5/4, and 5 8s are 40 plus 3 43/8. So यहाँ पे these two are the numbers. अब इन्हें subtract करना है. 43/8 में से हमें 5/4 को subtract करना है. For this, let's take out their LCM, and their LCM is 8. So 5/4 को हम 8 के according करने के लिए we will multiply by 2. So here the number is 10/8 and 43/8. So 43 में से हम 10 को minus कर देते हैं. We will get 33/8. अब इसे जो है हम मिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं. सो 33 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे. 1 will come. So 4 1/8 is the answer. 4 1/8. I hope this is clear, children. Like this only you have to do. The next question, let's do this question number E. So 14 multiply 5 plus 4. So 73/5. This is 73/5. Now this next, it's 16 multiply 10 is 160, and plus 9 is 169/10. So here it will be 169/10. अब दोनों के LCM लेंगे हम. So 10 will be the LCM. 5 और 10 के LCM लेंगे तो 10 LCM निकलेगा. अब 73/5 को हमें 10 के अकॉर्डिंग चेंज करना है. So we will multiply it by 2. So it will be 146/10. 146. ये जो नंबर बन जाएगा 146/10 subtracted by 169/10. Now let's subtract these numbers. 169/10 minus 146/10. अब दोनों के LCM को हमने सेम ले लिया. क्वेश्चन बन जाएगा 169 minus 146. अब 169 में से 146 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं.
So we will get 23/10. अब इस 23 को हम डिवाइड कर देते हैं 10 से. So it will be 2 3/10. 2 3/10. So children, here the answer is 2 3/10. So children, I hope this question is also clear to you, and in the same way you have to complete the rest of the questions that are given here. Now let's learn some word problems. Shivam covered a distance of 6 4/5 kilometer by bus. शिवम ने डिस्टेंस कवर की थी 6 4/5 किलोमीटर बस से, 3 6/8 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 2 2/5 किलोमीटर बाय कार. हाउ मच टोटल डिस्टेंस ही कवर्ड, उसने पूरा टोटल मिला के कितना डिस्टेंस कवर किया. तो हमें जब टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम ऐड करेंगे. तो इन तीनों डिस्टेंस को हमने यहाँ पे ऐड किया है, एंड फॉर दैट लेट्स कन्वर्ट दीज मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट किया है. अब इन सब के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम इनके पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे और उसके लिए हमने इनका एलसीएम निकाला है. एलसीएम निकालने के बाद हमने इनके डिनोमिनेटर को अलग अलग नंबर्स से मल्टीप्लाई करके सेम किया है. सो द नंबर्स आर 272/40 प्लस 150/40 प्लस 96/40. अब इन सबको ऐड करेंगे, वी विल गेट 518/40. नाउ अब इन्हें लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करने के लिए हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे. सो वी गेट 259/20. अब जो है इस नंबर को हमने डिवाइड किया है 259 को 20 से. सो टू कन्वर्ट देम इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, सो मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये बन जाएगा 12 19/20. Thus, Shivam covered a distance of 12 19/20 kilometers in all. Similarly, let's see this another example. A bag has 1/2 kg of rice. एक बैग है जिसमें इतना राइस है. If shopkeeper sold 2/3 kg, अगर शॉपकीपर ने 2/3 kg को सेल कर दिया, how much rice is left in the bag? राइस कितना बचा है बैग में. सो यहाँ पे हम देखेंगे राइस इन द बैग इज, इसे हमने कन्वर्ट किया इम्प्रॉपर में, तो ये बन गया 3/2. अब 3/2 kg था टोटल. अब कितना शॉपकीपर में बेचा, 2/3 बेचा. तो अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके लिए हम दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर देते हैं. सो डिनोमिनेटर को एलसीएम लेने के बाद सेम किया तो इट इज 9/6 एंड 4/6. तो 9/6 में से 4/6 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है. अब जब दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया वी गेट 5/6. सो thus 5/6 kg of rice is left in the bag. टोटल इतना राइस बचा है उस बैग में. लेट्स डू एक्सरसाइज 9.5. So here the first question is the weight of 2 books together is 3/1/4 kg. 2 बुक्स का जो वेट है वो इतना है. If the weight of one book is इतना, find the weight of the other book. अगर एक बुक इतनी हैवी है तो दूसरी बुक कितनी हैवी है, तो हम क्या करेंगे, टोटल में से वन बुक के कॉस्ट वेट को हम माइनस कर देंगे. So let's convert them into the improper fraction. So 3 4s are 12 plus 1 13. So 13/4. Similarly 5 1s are 5 and 6 7 7/5. So 13/4 और 7/5 ये दोनों हमें मिले हैं. अब इन दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, तो लेट्स मेक द डिनोमिनेटर सेम. सो इन दोनों के डिनोमिनेटर को हमने जब सेम किया, 8 is 4 × 5 is 20. सो 13/4 को हमें 20 करना है. So we will multiply 5. Similarly, let's multiply 5 here. It's 65/20. Similarly, 7/5 को हमें 20 में कन्वर्ट करना है. It's 28/20. अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं. Let's subtract them. 65/20
minus 28 upon 20. अब दोनों के डिनोमिनेटर्स को हम कॉमन लेके 65 minus 28 करते हैं. Let's subtract 65 minus 28. So it will be 7 and here it will be 37. So here the answer is 37 upon 20. Now let's convert this into the mixed fraction. 7, 1. So here the number will be 117 upon 20 kg. So this is the 117 upon 20 kg. So children, I hope this is clear to you. Now let's move on to this question number 3. Here Renu covered this much kilometer by bus, this much by car and this much by rickshaw. तो रेनू ने इतने किलोमीटर्स को कवर किया है. What is the total distance? तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे. So let's convert them into the improper fraction. So it will be, first will be 28 upon 13. Second will be 31 upon 13 and here it will be 43 upon 13. अब तीनों बस, कार और रिक्शा को हम ऐड कर देंगे. A plus B plus C, तीनों को ऐड कर देंगे. It will be 28 upon 13 plus 31 upon 13 plus 43 upon 13. अब 13 को हमने कॉमन ले लिया. So here the answer will be 28, 31 and 43. So here it is 102. So this is the total distance. Now let's convert this into the mixed one. So 7 times it's 91. So 2 minus 1 is 1 and 10 minus 9 is 1. So here the answer is 7, 11 upon 13. So total distance is 7, 11 upon 13 kilometers. I hope this is clear to you, children. Similarly, you have to complete these questions that are given here. Now let's learn the multiplication of fractions. So Raj has 3 squares. Raj के पास 3 squares हैं. He painted half of each square. हर square को उसने half paint कर दिया है. Using repeated addition method, total squares painted is 1 upon 2 plus 1 upon 2 plus 1 upon 2. So अब इनको जो है जब हमने plus किया, we get 3 upon 2. Now this can be written as 3 multiply 1 upon 2. Means 3 figure हैं तो यहाँ पे 3 and तीनों के half of part है means 1 upon 2. So इसे हम 3 upon 2 भी लिख सकते हैं. Multiplication of fraction by whole number. Multiplication, जो fraction का multiplication है उसे whole number से कैसे multiply करते हैं? To multiply a fraction by a whole number, we follow the following steps. हम जो steps हैं उन्हें follow करते हैं. First, write the whole number as a fraction. Whole number को fraction की तरह लिखना है. Then multiply the numerators. Numerators को multiply करना है. उसके बाद multiply the denominators. फिर denominators को multiply करना है. Reduce the fraction to the lowest term. Fraction को lowest term में करना है. Write the product as a mixed fraction. और जो प्रोडक्ट है उसे मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखना है. सो हियर द फ्रैक्शनल नंबर मल्टीप्लाई बाय होल नंबर इज इक्वल टू नंबर न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होल नंबर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द
fraction. Let's do this with an example. Multiply the following. 6 upon 7 multiply 3. तो यहाँ पे ये नंबर दिया है तो 3 क्योंकि एक होल नंबर है तो होल नंबर के नीचे हमेशा एक 1 डिनोमिनेटर होता है. So let's multiply this. So 6 is 18 and 7 1 is 7. So 18 upon 7 is the answer. अब इसे हमने mixed fraction में convert कर दिया. Similarly यहाँ पे mixed fraction में दिया है we have to multiply this with 12. So पहले इस mixed fraction को हमने improper fraction में convert किया. Improper fraction में जब convert किया ये बन गया 43 upon 8. अब 43 upon 8 multiply 12 upon 1. So अब जो है इसे हम lowest form में कर रहे हैं. So lowest form में करने के बाद we have to multiply 43 multiply 3 and 2 multiply 1. So answer is 129 multiply 2. So क्या बनेगा आंसर 64 1 upon 2 जब हम इसे mix में convert करेंगे. Now let's look at this example. Example number 2. Find 3 upon 8 of 800. 800 rupees है उसका 3 upon 8 पार्ट आपको बताना है तो हम क्या करेंगे सेम प्रोसेस टू बी फॉलोड 800 upon 1 लिख देंगे. We will multiply and divide and we will get the answer. So the answer is 300 rupees. So 300 जो है 800 का जो है 3/8 पार्ट है. नेक्स्ट इज 3 1/3 का 30 kg का 3 1/3 पार्ट निकालना है आपको. सो 3 1/3 को पहले हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया फिर 30 kg से इसे हमने मल्टीप्लाई किया. सो ऊपर वाले में हमें मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले से डिवाइड करना है. सो नीचे वाले से डिवाइड किया तो वी गेट 10. सो ये 10 multiply 10 is 100. सो 100 kg is 3 1 upon 3 पार्ट. मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन. अगर किसी फ्रैक्शन कोई फ्रैक्शन दिया है उसको मल्टीप्लाई करना है दूसरे फ्रैक्शन से तो हम क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस is equal to product of their numerator and their denominator. So let's see the example is given here. Here is a birthday cake 1/3 of which is given to Raman. So एक birthday cake आया जिसमें से 1/3 पार्ट रमन को दिया गया है to share with his friends, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने के लिए. He shaded the portion of 1/3 of the whole. तो पूरे में से उसने 1/3 पार्ट को क्या कर दिया शेड कर दिया. And Sudha has been given 1/2 of 1/3. अब इस 1/3 का 1/2 मीन्स आधा जो है सुधा को दिया गया है. सो ये जो 1/3 पार्ट था उसका 1/2 पार्ट उसने जो है सुधा ने ले लिया केक से रमन के. The shaded part represent 1/2 of 3. तो 1/2 1/3 का हमें यहाँ पे शो हो रहा है जो बन गया है 1/6 of the whole. So कैसे बना है 1/3 of the whole 1/3 of 1/2 is equal to 1/6. So we write 1/2 of 1/3 as 1/2 of का मतलब होता है multiply. So 1/2 multiply 1/3 जब इन्हें हमने multiply किया we get 1/6. Similarly, let's do this example. Example number 3. Multiply. We have to multiply these numbers. So in numbers को हमें multiply करना है. 15 upon 24 by 4 upon 5. तो अब हमने इन्हें multiply किया. We get हमने इन्हें जो भी कैंसिल करना था जो भी डिवाइड करना था वो करने के बाद we get 1/2. Similarly, this number is given 1/2 multiplied by 5/3. तो अब पहले 1/2 को हमने जो है इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया एंड वी गेट 5/2. अब इसे हमने मिक्स में कन्वर्ट कर दिया है. नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फाइंड 15/16 of 4/7. तो 4/7 को पहले हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया क्या बना 32/7. ओके अब जो है इन्हें जो है हमने सिंप्लीफाई किया. सिंप्लीफाई करने के बाद वी गेट 30/7. अब जो है 30/7 को हमने जो है इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया तो बना 4/2/7. 2 upon 7.
So children, I hope you have understood. हमें पहले मल्टीप्लाई करने से पहले we have to simplify the numbers. So now let's do this exercise 9.6. The first question is 6 by 3 upon 4. So 6 multiply 3 upon 4 is given. So पहले simplify कर देते हैं 2 times 3 times. Now अभी आगे simplify नहीं होगा तो 3 multiply 3 is 9 and 2. So 9 upon 2 is the answer. We can also convert this into mixed. Next, let's do this one E part. 8 upon 1 multiply by 7 upon 2. अब इसे हम simplify कर रहे हैं तो हमें मिला यहाँ पे. I hope this is clear. Next, let's do the C part. So 9 upon 1 multiply 3 upon 9. तो 9 से 9 divide हो गया. What is left? 3. So here 3 is the answer. Similarly, let's come to question number 2. Find the product. Multiply करना है तो हम ये कुछ भी simplify नहीं होगा. So यहाँ पे हम लिखेंगे 2 and 25. Similarly, यहाँ पे भी कुछ भी ऊपर से simplify नहीं होगा. So ये बनेगा 2 upon 9. Similarly, let's do this one. यहाँ पे भी कुछ भी simplify नहीं हो रहा है. So ये बन जाएगा 3 upon 35. Now children, let's move on to question number 3. Here we have to find the solution. So 7 2 is 14 plus 1 15. So 15 upon 2 multiply 1 upon 8. So nothing will be simplified here. So let's write 15 upon 16. Similarly, let's do this one. 1 upon 3 multiply 9 upon 27. अब 1 upon 3 multiply 9 upon 27 लिखा हुआ है तो अब 9 से 3 को हम simplify कर सकते हैं. So यहाँ पे आंसर बचा 1 upon 9. So this is answer. Similarly, let's do this E part. 1 upon 4 and 24. इन्हें हम simplify कर सकते हैं. So it will be 6. तो ये बन जाएगा 6 1 is 6 and 30. So 6 upon 30. So children, I hope this is clear. Similarly, you have to do the rest questions. Now let's learn the division of fractions. Let's learn how to divide fractions. Division of fraction by whole number. So here you can see we have to divide 5 upon 6 by 2. 5 upon 6 को हमें divide करना है 2 से. So 5 upon 6 is divided by 2. तो हम क्या करते हैं, जब भी डिवीजन का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम जो ये नंबर है बाद वाले को रेसिप्रोकल कर देंगे, मीन्स उल्टा कर देंगे. ये 2 upon 1 था तो 1 upon 2 कर देंगे और डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देंगे. सो अब जो है ये नंबर बन गया 5 upon 6 मल्टीप्लाई 1 upon 2. अब जो है इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट 5 upon 12. डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय फ्रैक्शन. होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड करना है तो सेम थिंग वी हैव टू डू. यहाँ पे डिवाइड करना है 2 upon 1 को 5 upon 6 से. तो हम क्या करेंगे, 2 upon 1 दिया गया है. अब इस डिवीजन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो बाद वाला नंबर है इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये बन जाएगा 6 upon 5. अब जो है हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 12 upon 15. डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन. जैसे फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से अगर डिवाइड करना है तो क्या करेंगे हम, 4 upon 5 को 1 upon 2 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है. तो डिवीजन यहाँ पे क्योंकि डिवीजन का साइन है तो डिवीजन के लिए हम क्या करते हैं, बाद वाले नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं, मीन्स उल्टा कर देते हैं. तो 2 upon 1 हो जाएगा ये. तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 8 upon 5. सिमिलर एग्जांपल इज गिवन हियर. वी हैव टू डिवाइड 6. 3 upon 4 को 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे डिवीजन का साइन है
तो हम पहले इसे कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में. अब डिवीजन के साइन को हटा के मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम 1/9 को रेसिप्रोकल कर देंगे. सो रेसिप्रोकल करने के बाद इट कैन बी सिंप्लीफाइड. सिंप्लीफाई करके वी विल गेट 3/4 एज द आंसर. Now let's do this exercise 9.7. Divide the following. अब यहाँ पे 3/5 को 3 से डिवाइड करना है. सो 3/5 तो ठीक है, डिवाइड का साइन लगा हुआ है, 3/1 है. तो अब डिवाइड के साइन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 3/5 मल्टीप्लाई 1/3 कर देंगे. सो अब ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो कट गए, सिंप्लीफाई हो गया, तो बचा 1/5. So here the answer is 1/5. Similarly, let's do this B part. 3/2 को डिवाइड करना है 6/1 से. डिवीजन के साइन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, बाद वाले नंबर को रेसिप्रोकल कर देंगे. सो ये बन जाएगा 1/6. अब इससे जो हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 × 2 is 4. So 1/4. Similarly, let's do this F part. पहले हम इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे. So it will be 44 + 1 45. तो 45/4 divided by 10/9. अब 10/9 लिखा हुआ है, तो अब हम इस डिवीजन के साइन को हटाने के लिए क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे. 45/4 मल्टीप्लाई 9/10. अब इसे जो है सिंप्लीफाई कर देते हैं. सो सिंप्लीफाई करने के बाद बचा 9 × 9 and 4 × 2. It will be 81/8. So 81/8 is the answer. अब इसे हम मिक्स्ड में भी कन्वर्ट कर सकते. So 10 1/8 is the answer. So children, I hope this division is clear. Now let's do this question number 2, question number 8. So 2/5 divided by 5/7. डिवीजन के साइन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 2/5 मल्टीप्लाई इन दोनों को रेसिप्रोकल कर देंगे, 7/15. So here it will be, so here 14/75 is the answer. Next questions you have to do on your own. Let's do another question from here. Let's do this one. 12 + 1 is 13/3 divided by, so 36 + 2 is 38/3. अब जो है इस डिवीजन के साइन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 13/3 मल्टीप्लाई 3/38. So here the answer is 13/38. I hope this is clear. Now let's move on to word problems. Here the first example is the cost of rice is 26 1/2 rupees per kg. 1 kg का 26 1/2 है cost. Find the cost of 10 kg of rice. 10 kg राइस का कॉस्ट हमें ढूंढना है. सो कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस दिया हुआ है, हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 kg की. सो यहाँ पे हमने पहले इसे कन्वर्ट किया है इम्प्रॉपर में. सो दिस इज द आंसर. अब इसमें हमने 10 को मल्टीप्लाई किया है. सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट ₹265. So 265 is the cost of 10 kg of rice. The cost of 9 pencil is ₹5. 2/5. So 9 pencil की कॉस्ट दी गई है. Find the cost of 1 pencil. तो मैंने आपको बताया था कि जब ज्यादा की कॉस्ट दी गई है और 1 की निकालनी, तो हम इस केस में हम करते हैं डिवाइड. सो यहाँ पे let's convert this into improper phrase first. So 27/5 is the answer. So 27/5 आया है इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने पे. अब जो है हमें क्या करना है, 1 पेंसिल की कॉस्ट निकालनी है, तो हम क्या करेंगे,
9 की दी हुई है, तो 9/1 था, सो 9 से हमें इसे डिवाइड करना था, तो जो है हम इसको अब इस डिवीजन के साइन को हटाने के लिए वी विल डू द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर, रेसिप्रोकल किया हमने, सो इट कैन बी सिंप्लीफाइड, सिंप्लीफाई करने के बाद वी गेट 3/5 as the answer. So the cost of one pencil is rupees 3/5. So similarly, let's do this exercise 9.8 children. So here the first question is a bus covers 40 kilometer in 1 hour. बस जो है 1 घंटे में 40 किलोमीटर जा रही है. हाउ मेनी किलोमीटर विल इट कवर इन 1/5 hours? तो इतने कितने किलोमीटर्स वो कवर करेगी इतने आवर्स में. सो 1 आवर में उसने कवर किया 40 किलोमीटर. सो 1/5 को पहले हम कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर में, सो इट विल बी 5/5 + 1 6/5. सो 6/5 आर में वो कितने किलोमीटर करेगी? सो व्हाट वी विल डू, वी विल अब 1 का दिया है, ज्यादा का निकालना है, हम करेंगे मल्टीप्लाई. सो 40 से हम 6/5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं. वी आर गोइंग टू गेट 48 kilometers. So the bus will cover 48 kilometers. I hope this is clear. Similarly, let's do this question number 3. Meenakshi had 4/5 of a cake. मीनाक्षी ने एक केक खाया, केक का 4/5 पार्ट लिया. She ate 1/2 of it. And how much part of the whole cake did she eat? So पूरे केक का उसने कितना पार्ट खाया? So यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक केक का 4/5 पार्ट था, उसमें से उसने 1/2 पार्ट खा लिया. तो 1/2 पार्ट को हम कट करेंगे and so it will be 8 minus. So मीनाक्षी ने जो खाया वो था 3/10 पार्ट खाया था उस केक का. हाउ मच पार्ट ऑफ द होल केक डिड शी ईट? अब पूरे केक में से आपसे पूछा जा रहा है कि पूरे केक में से उसने कितना पार्ट खाया था. तो लेट्स फाइंड आउट. चिल्ड्रन, लेट्स डू दिस क्वेश्चन नंबर 5. द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 9 3/5. लेट्स कन्वर्ट दिस इनटू improper fraction. 48/5 6/5. सो दो नंबर्स थे, जैसे कि नंबर ए एंड बी, दोनों का प्रोडक्ट आता है 48/5. अब लिखा है इफ वन नंबर इज 6/5 फाइंड द सेकेंड नंबर. सो एक नंबर हमें दिया है 6/5 मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू 48/5. तो हमें बी को फाइंड आउट करना है. तो हम क्या करेंगे, इस 6/5 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स दूसरे साइड लेके जाएंगे. सो इट विल बी 48/5 मल्टीप्लाई 5/6. So it will be cancelled. So here 8 will remain. So here the second number is 8. I hope this is clear to you. Similarly, you have to complete the rest of the questions. Children, with this we have completed the chapter fractions. I hope that you have understood the concepts very well, and I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay later.